Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank all the viewers of United States who are watching my videos, and I'm once again thankful to those viewers who are watching my videos and they are requested to subscribe, like and share my videos with others. Thank you very much. So let us start this session. Today's session is about gender issues, women issues in developing countries. After watching this video, you will be able to understand the gender issues, women's problem in developing countries. I have tried to highlight the basic women problems in developing countries, especially in Pakistan. Inequalities in three areas: political participation and decision making, economic participation, and decisions making power over economic resources. Gender empowerment measure is a measure of inequality between men's and women's opportunities in a country. In Pakistan, less opportunities of less opportunities are available for women and the men opportunities ratio is very high. All the executive posts are allocated for men. Gender empowerment measure combines focuses on the empowerment of women in a country with reference to their role in development. Since it is extremely difficult to quantify empowerment, the above parameters are generally accepted as reasonable indicators of women's role in a society. Since it is extremely difficult to quantify empowerment, the above parameters are generally accepted as reasonable indicators of women's role in any society. Gender empowerment measure has three component share of women in earned income, relative weight of women among
discriminators and professional workers share of women in share of women in the socio-economic and political process of a country also manifest their relative control over resources. In Pakistan, women have only access to resources. They can't control our resource. These three components indicates women's active role in gender-based violence, reflects and reinforces inequality between men and women, and compromises the health, dignity, security, and autonomy of its victims. It encompasses a wide range of human rights violations, including sexual abuse of children, rape, domestic violence, sexual assault and harassment, trafficking of women and girls, and several harmful traditional practices. How can we prevent violence against women? Legislative reforms should be formulated for the protection and promotion of women's rights. Although laws have been made for women protections, but the implementation of these laws is very low. Due to mobility problem, women can't access to the lawyer. Laws, rights, and responsibilities in family life must be met. In urban areas and remote areas, mountain areas, women workload is very high. They have been working all the household activities and they have less access to economic. Victims of violence must be offered physically and financially support. Victims of violence must be afforded psychological and financial support. A number of strategies adopted by the UNFPA Fund to address gender-based violence follow: ensuring that emergency interception is available for victims of sexual violence. For the victims of sexual violence, strengthening advocacy on gender-based violence in all country program in conjunction with the other United Nations partners and non-government organizations.
Educating for Women with Parliament and Women National Network. We have less seats for women participation in Parliament. Integrating messages on the prevention of gender-based violence into information, education, and communication projects. Projects should be designed and implemented for women empowerment, for women education, communication, and job opportunities. This generally positive global commitment to women's rights has not been reflected in the rate of progress. Ineffective enforcement of legislation is the most common constraint. It is such cultural traditions in developing countries that create the most stubborn obstacle to the essential step towards women equality. In development countries, the basic human rights are not available for women. Women are the most poor and marginalized in the society of developing countries. They have a very heavy workload. They are facing domestic violence. They are unpaid labor. The belief that girls should work in the home and in the field rather than go to school. And the presumption that a woman acquires no right to property on marriage are deeply entrenched in many societies. Forced marriage of early age girls is a very common problem. Thousands of girls compromising on marriage. जब एक लड़की की शादी होती है तो ये तस्वुर किया जाता है ससुराल में कि वो उनकी ज़रख़रीद लौंडी है। वो उनसे कोई भी काम ले सकते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं और घरेलू तशद्दुद का शिकार बनाते हैं, लेकिन उसको एज ए ह्यूमन बीइंग तस्वुर नहीं किया जाता है। उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बांधे जाते हैं।
इसी तरह एक औरत मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होकर मुख्तलिफ अमराज का शिकार होती है। औरतों में डिप्रेशन, टेंशन, ये बीमारी बहुत आम है। अगरचे वो घर का सारा काम करके फिर भी उसको कोई एहतराम, कोई इज्जत नहीं दी जाती है ससुराल में। तो इसके लिए ऐसे कवानीन बनाए जाए, या अगर कवानीन है भी तो उनको उन पर अमल दरामद किया जाए। अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ मसाजिद में ऐसे टॉक शोज या सेमिनार्स मुनाकिद किए जाए और आगाही दी जाए लोगों को, इमाम मस्जिद के थ्रू, असातिज़ा के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, लॉयर्स के थ्रू, ताकि माशरे में ये जो सिनफी नाइंसाफ़ी है उसका कुछ इतराक हो सके। जहाँ सास बहू को मेंटली टॉर्चर करती है, वहाँ अपनी बेटी को बहुत फोकियत देती है। मतलब एक ही घर में एक बहू, एक औरत, एक बेटी, एक बहू, दो इंसान है, लेकिन उनके साथ बहुत इम्तियाजी सलूक किया जाता है। बेटी को सर पे बैठाया जाता है, जबकि बहू को जरखरीद लोंडी समझ के उस किस्म के काम लेते हैं। इस तरह मुख्तलिफ औरतें जहनी अमराज का शिकार होकर पागल खाने तक पहुंच जाती हैं और कुछ खुदकशियां कर लेती हैं। तो इन सब की जिम्मेदार स्टेट भी है, क्योंकि स्टेट उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पे नहीं करा रहा है। जो वो कवानीन सिर्फ किताबों में बंद पड़े हैं और सिर्फ उन कवानीन की एक्सप्लेनेशन की जाती है जहां मर्दों को ज़्यादा हुकूक दी जाती है, मर्दों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की तालीम दी जाती है, जबकि एक औरत को एक जानवर से भी बदतरीन सलूक किया जाता है देहाती इलाकों में, और बाज़ तालीम याफ्ता लोग भी इस तरह कर जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर कोई इक़दामात होने चाहिए और बैनुल अक़वामी इदारों से गुजारिश है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन्फोर्स करे कि वो औरतों को बुनियादी हुकूक से महरूम ना रखें, उनको घरेलू तशद्दुद, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर ना करें। The disempowerment of women is often reinforced in a country's law. For example, many countries in sub-Africa are in various stages of amending laws which prevent women from giving access to land and property. ये पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मसला है कि औरतों को वो जागीर में, वरासत में वो हिस्सा नहीं दिया जाता है। अगर कोई औरत अपने हक मांगती भी है तो उसके साथ पूरा ख़ानदान दुश्मनी करते हैं, जबकि इस्लामी क़वानीन में एक औरत को शरई तौर पर अपने वालिदैन के जायदाद में हिस्सा देने का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये कुरान पाक और हदीस से भी वाज़ेह होता है कि एक औरत को वरासत में हक दिया गया है, लेकिन माशरे के लोग नाइंसाफियन इसके राह में रुकावट बन जाती है और एक औरत एक शरई हक से महरूम हो जाती है। तो ऐसे कवानीन की वजाहत तशरीह की जाए मुख्तलिफ इदारों में, ताकि ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए। In Islamic countries where elements of Sharia law governing the behavior of women remain in place, the Pakistan government has encountered resistance from Islamic political parties to its efforts to reform the Hudud Ordinance law, which declaim that adultery is a crime which carried out by women and which make it virtually impossible for a man to be
convicted of rape. The burden of unpaid domestic work for women is particularly acute in developing countries. In accessing progress in women opportunities for non-agriculture work. पाकिस्तान के मुख्तलिफ देहातों में भी औरत ज़रई कामों में मर्दों के शाना बशाना काम करती है। इसमें चारा कलेक्शन, चारा जमा करना, लकड़ियां जमा करना, पौधों को पानी देना, जानवरों को चरवाना, पास्चर्स पे और अराउंड द विलेज चरवाना और घर के सारे कामकाज करना। घर वालों के जहाँ पानी की सहूलियत नहीं है वहाँ दूर दराज दरिया में या चश्मों में जाके औरतें सरों पे पानी उठा के ले आती हैं। ये सारे अनपेड वर्क है। इसके लिए इनको कोई मुआवजा देना तो दूर की बात है, इसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से औरतें मुख्तलिफ अमराज का शिकार होती हैं, स्पेशली इन पहाड़ी इलाकों में। जिस तरह के अपर दीर चित्राल में पानी लाने के दौरान बच्चे और औरतें मुख्तलिफ जगहों पर गिरकर माजूर हो जाती हैं, मतलब जिस्मानी तौर पर माजूरी का शिकार होती हैं, क्योंकि ये चश्मे इतने दूर हैं और दूर जाके पानी लाना सरों पे उठा के औरतों का काम होता है, पानी स्टोर करना। तो ये ज़रूरी कामों में भी शाना बशाना मसरूफ होने के बावजूद इसको वो बुनियादी हुकूक, इसको वो इज्जत नहीं हासिल जो कि एक इंसान को मिलनी चाहिए। This predominant rule in tending crops and livestock as well as coping with large extended families place women in the front line against the connected global crisis of food security and climate change. The Sustainable Development Report estimates that two-thirds of women in developing countries find themselves in vulnerable piecework such as farming or in unpaid household tasks. बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे क़वानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में आगाही के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने चाहिए ताकि वो गांव-गांव जाकर लोगों को बुनियादी हुकूक के बारे में आगाही दें।